بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, little boys and girls of class 6. This is your English class and I'm your English teacher. Today I'll talk about personal pronouns. Before starting this topic, open your books at page number 32. On page number 32, this is the topic personal pronoun. But before personal pronouns, you have to know about pronoun. What is pronoun? Pronoun are words we used instead of a noun. ये अल्फाज होते हैं, ठीक है, जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में हम किसी नाउन को लगाते हैं, तो उसके बाद जब हम उस नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम प्रोनाउन को लगाते हैं. मिसाल, अली इज़ अ गुड बॉय, अली गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मिसाल, ये 3 सेंटेंस मैंने बता दिए, तो इसमें बार बार ये अली का इस्तेमाल ये ठीक नहीं है. ग्रामेरियंस कहते हैं कि यू शुड यूज़ प्रोनाउंस लाइक दिस. Ali is a good boy, he comes to school on time, he gets up early in the morning. तो ये ही इसको हम pronoun बोलते हैं. We have both subject and object pronouns called personal pronouns. कहते हैं हमारे साथ हम जो है subject और object pronouns भी वो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसको हम personal pronouns बोलते हैं. बोलते हैं. तो ये कहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस, वी हैव बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं. या इस तरह भी हम बोल सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, मिसाल 2 बंदे किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो द स्पीकर जो है उसमें दोनों में स्पीकर जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो सुन रहा है, ठीक है, उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं. जिस बंदे के बारे में बात हो रही है और वो वहाँ पे मौजूद नहीं है उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे हैं. यहाँ पे आई, दिस इज सब्जेक्ट, शी, ही, यू, इट, दे, वी. इसके ऑब्जेक्ट जो है वो मी, हर, हिम, यू, इट, देम, अस. So now this is personal pronouns. Personal pronouns are used for persons. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये मैंने आपको अभी बताया. सो अभी ये एक्सरसाइज जो है इसको आपने इस पर्सनल प्रोनाउन के मदद से हल करना है, ठीक है. पार्ट नंबर ए, चूज द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. सही पर्सनल प्रोनाउन इसमें लगाएं. एम सिटिंग ऑन द सोफा, तो इसमें दिए हैं शी, ही, आई, दे. So she is incorrect, he is also incorrect, they is also incorrect. The right answer is I. I am sitting on the sofa. Because with singular subjects, he, she, it, we use is, and we use am with I, and you, we, they are plural subjects, so you use are, okay. So the right answer for question number 1 is I. The question number 2, the women gave sweets to the children, but they didn't think
हा, ठीक है। तो ये हा, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आर प्लेइंग फुटबॉल। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि दे हमारे साथ जमा सब्जेक्ट है, इसलिए द बॉयज़ वर लेट सो द टीचर स्कोल्डेड देम। ये राइट आंसर है इसके लिए, ठीक है, दिम। और ये द बॉयज़ हैं तो जमा, हमने इसका ऑब्जेक्ट हमने जमा लगाना है। आर यू फ्रॉम लाहौर? आर यू फ्रॉम लाहौर? सो द राइट आंसर इज यू हेयर। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यू। इन क्वेश्चन नंबर 6, इज़ अ वंडरफुल डे टुडे, ठीक है। तो इज़ अ वंडरफुल डे टुडे, इसका राइट आंसर हमने लिखना है इट। सब्जेक्ट को हम लगाएंगे इट, क्योंकि ये ज़्यादातर मौसम के लिए डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल डे टुडे। नंबर 7, आर स्विमिंग इन द पोल। सो वी आर स्विमिंग इन द पोल। वी इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो देयरफॉर आर इज़ necessary here to use. Have you got a computer, Maria? Have you got a computer, Maria? This is the right answer. You. Zafar is in the cricket team. He is going to the playground. The right answer is he here for question number 9. Number 10. This book has many interesting stories. I like it very much. It very much. ठीक है? Are the fastest runner in the team and we are depending on you. You are the fastest runner in the team, ठीक है? So this is the right answer. Arif and Zara talk to me about the new novel I wrote. Me is the right answer for this question. After personal pronoun, this is one of the most another part of English grammar, possessive pronoun. पोजेसिव प्रोनाउन, ये क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट हेल्प अस टू शो पोजीशन और ऑनरशिप, ठीक है। ऑनरशिप, मलकियत को बोलते हैं। ऑनरशिप क्या है? ईज़िली आप इसको ले लें, ये कोई मुश्किल नहीं है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है, इट शोज़ दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। जब एक चीज़ आपकी मलकियत हो, वो आपका हो, तो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एट्रीब्यूट्स ऑनरशिप टू समवन और समथिंग। किसी चीज़, जो चीज़ किसका है, जिसके मलकियत में है, तो वो जो है उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। लाइक माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी ईजी. We can use a possessive pronoun instead of a noun phrase. Example, the kids are yours and mine. The house is theirs and its paint is flagging. We shall finally have what is rightfully ours. Their mother gets along well with yours. Now these board words, these are possessive pronoun. Now this is exercise. Part number A, choose the correct possessive pronoun and to the gap in the second sentence in each question to give it the same meaning as the sentence before it. नीचे आपको 2 sentences दिए हैं, उसमें आपने लास्ट सेंटेंस में इसको लगाना है, और जिस तरह पहले में सही लगा है, इस तरह आपने इसमें भी लगाना है। फर्स्ट में कहते हैं I didn't have my umbrella. So Maria lent me her umbrella. I didn't have my umbrella, so Maria lent me hers. Lent me hers. This is the right answer, okay? Number 2, her car is faster than my car. Her car is faster than mine. This mine is the right answer here. That's Afzal's car and this is my car. That's Afzal's cars and this is mine. This mine is the right answer for question number 3. Now in question number 4, that food is cat's food and not their food. That food is cat's food and not theirs. So this is the right answer. Question number 5, his car is out of order and needs repair. The car that is out of order and needs repair is his. This is the right answer. Question number 6, this house is my property
and that is their property. This is my property and that is theirs. This theirs is the right answer. Do we have to study at my house or your house? Do we have to study at my house or yours? This yours, this is ownership. Okay. Number 8, their cat is running down the street. The cat running down the street is theirs. So this is the right answer. Dear students, I hope you enjoyed today's lesson. Keep watching my videos and stay happy and healthy up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.